Good evening, everyone. I am Yashi Pandey, your mentor for English, and I welcome you to the part 2 from the diary of Annie Frank. Yes, कल मैंने आप लोगों को बताया था about Annie Frank and what the story was all about, why she felt like she wanted to write a diary, why was there so much of dilemma in her mind before she wanted to write a diary, and then came a thought process जहाँ पे उसने finally decide कर लिया कि this is why she wants to do it. She wants to make it her best friend, जिसके साथ वो अपनी रोजमर्रा की डायरीज में या टू डू लिस्ट या नहीं बनाएगी. She will be making something very special out of the diary and she named her Kitty, right? उन्होंने अपनी लाइफ स्केच भी दी. उन्होंने बताया कि रैंडमली अगर कोई भी रीडर मेरी डायरी पढ़ेगा तो उसे क्या पता चलेगा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं. तो व्हाई नॉट गिव इट अ लाइफ स्केच फर्स्ट, राइट? So think about a girl who is just 13 years age, right? And she is so good to understand what can actually impress a reader. How good a writer she can be. Yes or no? Let us start reading her story. Next. मैं लास्ट पैराग्राफ कल वाला फिर से रिपीट करूंगी, लेकिन उससे पहले आई वॉन्ट एवरीवन टू लाइक एंड शेयर द सेशन इफ यू हैव नॉट लाइक्ड एंड शेयर इट. यस, ठीक है, डू लाइक एंड शेयर द सेशन एज मच एज पॉसिबल बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो आई एंडेड द चैप्टर ऑन दिस स्लाइड yesterday. It stated, उसने कहा it was in the summer of 1951 that my grandma fell ill. 1941 में उसकी ग्रैंडमा की तबीयत खराब होती है and had to have an operation. So my birthday passed with a little celebration. इसीलिए उस साल हम सब ने बहुत ज्यादा सेलिब्रेट बर्थडे को नहीं किया. Then she said that grandma died in January 1942. Then she said कि ग्रैंडमा की डेथ जनवरी में होती है 1942. Okay, what happens then? What happens then? No one knows. No one knows how often I think of her. किसी को नहीं पता है कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ. How often I am thinking of her. And I still love her. And that she still misses her grandma. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. वैसे 1942 का सेलिब्रेशन ज्यादा अच्छा था. क्यों? क्योंकि 1941 में ग्रैंडमा की तबीयत जब खराब थी तो सेलिब्रेट कर नहीं पाए. And even grandma's candle was lit along the rest and she said कि उसमें grandma को भी रिमेंबर करते हुए उनका कैंडल भी जलाया गया था. The four of us are still doing well. यानी हम चारों माता पिता और बच्चे, मतलब हम दोनों भाई बहनें और मेरे मम्मी पापा, we are still doing very good. We are very good. We are in a very nice state of health. And that brings me to the present date. और अब आ जाइए आप लोग आज के दिन पे. And today's day is on 20th of June 1942. It is on 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. और वहां पे क्या है, मैं अपनी डायरी पे solemn dedication करूंगा. ठीक है, my complete dedication will be from today onwards on my diary. Is that okay? Next, अब उसने डायरी लिखना स्टार्ट करिए. Let's see. Dearest Kitty, she says her diary. Dearest Kitty, our entire class is squawking on in its boots. Our entire class is squawking. मुझे हाइड हो जाना चाहिए ना, आप लोगों को दिखेगा इससे. रुको, this will make it easier. What does this line means? इसका मतलब है कि उनकी जो entire class है ना, they may be worried about a test or quiz that was coming up. They were quacking. They were literally worried. वो लोग बहुत ज्यादा चपर चपर कर रहे थे. Why? They were making a quack. Quack is a noun. They were talking foolishly and they were talking very loudly. Now she is talking to her diary. वो बता रही है कि दिन में स्कूल में क्या हुआ. And maybe there was a test or maybe an exam that was coming up. तो जो class है, it was quacking. The reason, of course, is the forthcoming meeting. और क्या reason है? It is the forthcoming. Forthcoming का मतलब होता है upcoming. The reason is the upcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. कौन पास होगा
और कौन फेल होगा? हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधा से ज्यादा क्लास तो बेट्स लगा रहा है कि मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jakes. वहां पे GN और एनी जो थी वो हंस रही थी एक दो लड़कों के ऊपर जिनका नाम था CN and Jakes, who have staked their entire holiday savings on their bet. जिन्होंने पूरी की पूरे पैसे लगा दिए अपने हॉलीडे सेविंग्स के सिर्फ एक बेट पर, और ये लोग उसी का मजाक उड़ा रहे थे. From morning to night, it is you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. और ये लोग पूरा क्लास यही कर रहा था कि ओ तुम पास हो गए, कोई कह रहा नहीं मैं नहीं पास होऊंगा, तुम पास हो गए. And this is, see, they are children, right? They are talking like this. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. मतलब G's जो G है ना, ये लोग क्लास मॉनिटर्स हैं, ठीक है? तो जी जो है वो प्लीड कर रही है मतलब बेग कर रही है कि भैया चुप हो जाओ बच्चों को, वो नहीं चुप हो रहे. और मेरा एंग्री आउटबर्स्ट हो रहा है, आउटबर्स्ट मतलब आई एम वेरी एंग्री एट द स्टूडेंट्स, और वो भी बच्चों को शांत नहीं कर पा रहा, इतना ज्यादा क्वैकिंग हो रहा है. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. वो तो कह रही है अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मुझे तो लगता है 1/4 of the class should be kept back, right? That means वो बोल रही है कि मेरे क्लास के बच्चे इतने बदमाश हैं कि इनको तो रख ही देना चाहिए, इनको तो पास ही नहीं करना चाहिए. डमीज नॉर्मली देखो एक मॉडल होता है, ठीक है, या फिर कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम किसी को मॉक करते हैं. सो इन दिस केस शी सेज अगर तुम मुझसे पूछोगे a quarter of the class should be kept back. भाई 1/4 of the class, a quarter is 1/4 of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on the earth. Oh God, she says that teachers are very unpredictable. Unpredictable मतलब they are very uncertain. आप नहीं बता सकते कि एक टीचर के मन में क्या चल रहा है. They're very uncertain creatures. I'm not so worried about my girlfriends and myself. वो कह रही मेरी जितनी भी गर्ल फ्रेंड्स हैं, मतलब गर्ल फ्रेंड्स, गर्ल who are friends and myself, मैं अपने आप को लेकर चिंतित नहीं हूँ. She knows that we will make it. उसे पता है कि वो तो पास होगी. The only subject I am not sure about is maths. But वो डर किस सब्जेक्ट को लेके रही है? She is a child. She is worried about a math subject. Anyway, all we can do is wait. वो कह रही अब तो समय आ चुका है, तो अब हम anticipate करके क्या करेंगे? It's better we sit and wait. Until then, तब तक we keep telling each other not to lose heart. और तब तक हम सबको यही कह रहे हैं कि भैया अच्छा तुम courage मत खो, disheartened मत हो, don't be disheartened. हम सबको यही कह रहे हैं. I get along pretty well with all my teachers. Annie Frank was very good with others. She said मैं अपने teachers के साथ बहुत अच्छे से बातचीत कर पाती हूँ. They are 9 of them, 7 men and 2 women. वो कहती है कि मेरे teachers के साथ मेरा जो coordination है वो बहुत अच्छा है. 9 teachers में से 7 men हैं and 2 are women. Mr. Keesing. Now there is one Mr. Keesing, the old foggy who teaches maths. Now see, she was telling that she is actually afraid of maths. So what is the meaning of the term foggy? He's a very old-fashioned, competitive person, very conservative. There is an old foggy. Old foggy का मतलब ही होता है, ये कई बार slang की तरह use करते हैं. They are very old-fashioned people. ठीक है. So there is an old-fashioned foggy who teaches math. और उनका नाम क्या है? Mr. Keesing. He was annoyed with me for ages. वो मेरे से लंबे समय से ना annoyed ही रहते हैं, मतलब मेरे से irritated रहते हैं, because I talk so much. मतलब मेरी क्लास मुझे वो कभी पसंद नहीं करते थे, because I talk a lot. After several warnings, he assigned me extra homework. और पहले तो वो मुझे warning देके छोड़ देते थे, बाद में he started giving me some extra homework also. An essay on the subject, a chatterbox. उन्होंने मेरा ही नाम लगा के मुझे लिया कि तुम एक काम करो, तुम एक essay लिख के आना. And the title of the essay was a chatterbox. A chatterbox? What can you write about that? Now Annie is thinking, why did he give me a topic, a chatterbox? What can someone write about that? I would worry about that later. वो कहती है मैं इसके बारे में चलो बाद में सोचूंगी. I jotted down the title. तो jot down का मतलब होता है she wrote down the title. Jot down means to write down. So what did she do? She write down the title in my notebook, tucked it in my bag.
आपने शर्ट्स को टक होता हुआ देखा होगा, आपने देखा होगा जैसे शर्ट को अंदर, शर्ट पैंट के अंदर घुसा के पहना चाहता है ना, सो यू टक इट इन योर बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। और फिर मैं चुपचाप बैठ गई। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माय होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माय आई। और फिर उस दिन जब मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया, अचानक से उस नोट पे मेरी फिर से नजर पहुंच गई जो होमवर्क में मिला था मुझे, a chatterbox. I began thinking about the subject. Now she is saying कि I was thinking about the subject, क्या लिखें, while chewing the tip of my fountain pen, and she was like doing this action कि आखिर इसमें क्या लिखा जा सकता है, what can I write about the topic, है ना? Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with the convincing arguments to prove the necessity for talking. लेकिन अब उसे लग रहा है कि क्योंकि उसको अ चैटर बॉक्स बोला है तो उसको कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स करने पड़ेंगे ताकि वो बोलती रह पाए ना। एनी वर्ड कुड रैम्बल, रैम्बल का मतलब क्या होता है पता है आपको? चैटर। कह रहे कि बड़े बड़े स्पेसेस लगा के तो कोई भी बैबल कर सकता है, एनी वन कैन बैबल। लेकिन अब वो आर्ग्यूमेंट सोच रहे कि मैं क्या लिखूं कि प्रूव हो जाए कि बच्चे तो बोलते ही है। I thought and thought, और फिर वो कहती है कि I keep on thinking and thinking, I thought and suddenly I had an idea. तभी उसे एक आइडिया आता है। I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and I was satisfied. और फिर उसके मन में एक आइडिया आता है। उसके बाद उसने 3 पेजेस भर दिए जो मिस्टर कीसिंग ने उसे दिया था, and now she was feeling very satisfied कि भैया मेरे मन में जो आया मैंने तो लिख दिया। फिर क्या हुआ? I argued that. Now, what she wrote in the letter or the essay was the most important part of this section. What she wrote was, I argued that talking is a student's trait. कि talking तो एक बच्चे का trait है. A trait is a quality. It is the quality of a student. Obvious सी बात है भाई, बच्चा पूछेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? And that I would do my best to keep it under control. और फिर कहती है कि मैं लेकिन चुप रहने की कोशिश करूंगी। ओल्ड फॉगी यानी द ओल्ड फैशन मैन, एन ओल्ड फैशन पर्सन rambled on talk to write aimlessly for long convincing argument, और उसने फिर ramble करने की कोशिश करी, and she was going to write aimlessly for long convincing argument, a statement made in such a manner that people believe it, quacking in its boots, shaking with fear and nervousness. 2019-30 53 from the Diary of Annie Frank. But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more. मतलब वो कह रही है कि मैं कैसे लोगों को convince करूं that people that you know they should believe with shaking and they should shake with fear and nervousness. और फिर वो लिखती है कि the year 2019 to 20 है ना, and then she says 53. This is the page number from the Diary of Annie Frank. But I would never be able to cure myself. लेकिन वो कहती है मैं कुछ भी कर लूं, मैं अपने आप को चुप कर ही नहीं सकती क्योंकि मेरी मॉम भी उतनी बात करती थी, if not more. And that's that. There is not much you can do about inherited traits. और वो कहती है कि आखिर अब inherited है trait मेरे अंदर, है ना? This is something which I've got from my mother. So she says it is an inherited trait. That means inborn trait है उसके अंदर, ये वाला उसकी मॉम से आया है। Mr. Keesing had a good laugh at my arguments. Mr. Keesing पहले तो हंसे, but when I proceeded to talk my way, लेकिन जब मैंने आगे बढ़कर बातें करी through the next lesson, he assigned me a second essay. उन्होंने, लेकिन जब मैंने अपने arguments को उनके सामने रखा, he assigned me a second essay, incorrigible chatterbox. Incorrigible मतलब habitual. He said that I was an habitual chatterbox, a person who is incurable. Incorrigible means I was incurable. मतलब ये मेरे disease है कि मैं इतना बात करती रहती हूँ. This is what he said to her. And he gave her another essay. What happened next? I handed it in. उसने कहा कि मैंने ये लेटर को भी उन्हें हैंड ओवर किया, ठीक है? I handed it in. फिर मैंने उन्हें दिया. And Mr. Keesing had nothing to complain about the 2 whole lessons. लेकिन मिस्टर कीसिंग के पास इस बार मेरे को कंप्लेन करने के लिए कुछ नहीं था. However, during the 3rd lesson, he had finally had enough.
लेकिन थर्ड लेसन में उनके पास अब उनका दिमाग खराब हो चुका था. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. अब उन्होंने उसको थर्ड ऐसे दिया कि तुम अभी भी चुप नहीं हो रही हो. Write another essay. This time the title was Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. The class roared. The entire class started laughing. They roared. I had to laugh too. मेरी मजबूरी थी, मुझे भी हंसना पड़ा. Though I would nearly exhausted myself ingenuity on the topics of Chatterbox. जबकि मैंने अपने आप को इतना ज्यादा exhaust किया. My ingenuity, my genuity. क्या लिखा हुआ है कि इतने लंबे समय से मैं एसेज लिख रही थी, इनको मुझे तीसरा ऐसे देना था, और मैंने अभी तक अपने आप को क्या किया, अपने आप को इंजेन्युइटी पर, मतलब क्या बोलते हैं, रुको मैं आपको यहाँ पे इसका मीनिंग लिख देती हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, छोटा कर ले पेन को थोड़ा सा. यस, इसका मतलब मैंने अपनी क्रिएटिविटी को वेस्ट कर दिया. सोचो वो लड़की बुरा नहीं मान रही है, वो अभी भी कह रही है क्या मैंने अपनी क्रिएटिविटी को वेस्ट कर दिया ऑन द टॉपिक्स ऑफ चैटर बॉक्सेस. अब मैं तीसरा टॉपिक भी लिखूं. She said it was time to come up with something else. वो कह दिया अब कुछ मुझे ओरिजिनल सोचना पड़ेगा एकदम से. My friend Sane, who is good at poetry, offered to help me write the essay. Now उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था सानी, and she was very good at poetry. She said अच्छा चलो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी from beginning to end in the verse, and I jumped for joy and she was very happy. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject. वो कहती है मिस्टर कीसिंग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम. वो कहती है लेकिन आई विल मेक श्योर कि ये जो जोक है वो उनके ऊपर हो. ठीक है, नेक्स्ट. आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. वो कहती है मैंने फिर अपना पोएम फिनिश कर दिया एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. मतलब उसने बहुत अच्छा पोएम लिखा, उसे खुद ही लग रहा है. It was about a mother duck and a father swan. इस स्टोरी में मदर डक और फादर स्वान के बारे में स्टोरी थी. With 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. जिसमें 3 डकलिंग्स थी जिनको फादर ने बीट कर करके, बाइट कर करके मार डाला क्योंकि वो बच्चे बहुत क्वैक करते थे. Luckily, Mr. took the joke the right way, and thankfully he took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. उन्होंने ना सिर्फ वो पोएम पूरी क्लास को पढ़ के सुनाया बल्कि दूसरी क्लासेस को भी पढ़ के सुनाया. तब से, since then, I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework. तब से मुझे बात करने दिया जाता है और मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिलता. उल्टा, on the contrary, Mr. Keesing always is making jokes these days. आजकल वो खुद ही मजाक करने लगे हैं बच्चों के साथ. So this is what she wanted to say through the poem. She wanted to say that there was a duck who had 3 ducklings. लेकिन उसने अपने बच्चों को मार डाला. क्यों? That means he was trying to cut the feather of the students by not letting them ask questions, by not letting them talk. This was her brain. How brainy she was, right? So yes, this was the entire passage, guys. This is yours, Annie, which was extracted from the diary of a young girl with slight adaptation. Thank you so much for listening so patiently throughout the class. Now when I say thank you, I mean thank you. क्योंकि ये 2 passages आप लोगों ने मेरे साथ पढ़े, वो भी offline mode में, right? The sessions were premier and you did your best. If you have enjoyed learning this story, please write, like and share the session, but the test is still awaiting. So on Monday or Tuesday, we'll be getting a session which will be a complete test on this given chapter. That's all for today. Thank you so much for joining the class. Keep imbibing, children, because imbibing is better than learning. Do like and share with your friends and make sure that a lot of students join the session as well. Take care. Keep imbibing. We believe in you.